निर्मलभाई कुमार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सौराष्ट्र प्रांत संगठन महामंत्री। आज माननीय डॉक्टर तोगड़िया साहेब पूरा सौराष्ट्र में जे कमोसमी वरसाद वरस्यो तो अने ए गामडामां जे खेडूतोने वधारे वधारे नुकसान थई छे अने जे नाना खेडूतो छे ए खेडूतोने जे गाम होय ए गामना दाताओ द्वारा जे सूरत में वसता होय, अमदावाद में वसता होय, विदेश में वसता होय एना द्वारा खेडूतोने सहाय आपवा माटेनो प्रवास हतो अने 4 गामनो प्रवास એટલે કે બોટાદ તાલુકાનું લીંબડિયા ગામ, સાવંડ ગામ, લીલિયા તાલુકાનું અંટાળિયા ગામ, સાજનટીંબા ગામ અને આંબા ગામ આ ગામોમાં ખેડૂતોને સહાય ફૂલ નહીં તો ફૂલની પાકડી રૂપે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ, રાષ્ટ્રીય કિસાન પરિષદ દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું અને એમાં માન્ય વિશેષ ઉપસ્થિતિ માન્ય ડોક્ટર તોગડિયા સાહેબની રહી હતી। भारत माता की जय। सरकार द्वारा जाहिरात કરવામાં આવી છે દરેક ખેડૂતોને સહાય જાહેર કરવામાં આવી છે। એક વીઘા દીઠ 3500 રૂપિયાની સહાય ત્યારે પૂરતી સહાય મળે તે માટે हाँ जी, सरकारे जे बधे सरकारों कई ना कई प्रयत्नों करती होय छे अने ए सरकार द्वारा कई ना कई खेडूतोने सहायता आपता होय छे। वधारे सहाय खेडूतोने थळ उपर जई अने खेडूतोने आपे एवी सरकार पासे पण अमारी मांगणी छे। राष्ट्रीय वनराज से नेटवर्क से खैर राष्ट्रीय बजरंग दल सौराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष। आज हिंदू हृदय सम्राट डॉक्टर प्रवीणभाई तोगड़िया जी आज बोटाद जिला कार्यालय की मुलाकात करवा आया छे अने मुलाकात में बहोળી संख्या में कार्यकर्ताओं तेमज स्थानिकों एकठा थई अने प्रवीणभाई अभिवादन कर्युं ते बदल हूँ प्रवीणभाई आभार मानु छुं के अमारा कार्यालय आया अने आजनो कार्यक्रमनी जे सूचना आपी आ रीते अमे काम कर्युं। आज रोज गुजरात में बोटाद मुकामे आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दलનું નવું કાર્યાલય શરૂ થયું એ નિમિત્તે બોટાદ આવવાનું થયું। સૌરાષ્ટ્રમાં આવવાનું કામ દિવાળીમાં વધારે પડતા વરસાદને કારણે લાખો ખેડૂતોની પાક નષ્ટ થઈ ગયો છે એટલે ગામમાંથી નીકળીને શહેરોમાં ગયા છે અને સમૃદ્ધ થયા છે। એમની પાસે પૈસા માગી એમના જ ગામના ખેડૂતોને પૈસા આપવા એવા 4 ગામોમાં હું પૈસા આપવા ગયો હતો અને એવા અનેક ગામોમાં પૈસા આપવાની વ્યવસ્થા કેશ પૈસા રોકડા પૈસા आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल अने राष्ट्रीय किसान परिषद द्वारा करी छे। सरकारे पण मदद करी छे तो पण समाज तरफथी खेडूतोने मदद करवानी अमारा द्वारा पहल छे अने एना माटे अमरेली अने बोटाद जिल्लाना 4 अलग अलग गामोमां हूँ पोते आर्थिक मदद करवा गयो तो अत्यारे अमारो अभियान ठेक ठेकाणे हनुमान चालीसा केंद्र अर्थात दर शनिवारे लोग एकठा थईने हनुमान चालीसा करे एवा 47 हनुमान चालीसा बोटाद शहर में चाले छे। लगभग 101 बोटाद तालुका ने शहर में थईने चाले छे। 84 अमरेली शहर में चाले छे। तो अहींया हनुमान चालीसा नी संख्या वधारवी ए अमारुं अभियान चाली रह्युं छे। खेत मजूरों ने पण मदद मळवी जोईए कारण के खेती नष्ट थई जाए तो आगळ खेत मजूरों ने पण मजूरी मळवानी नथी એટલે ખેડૂતોને પણ સહયોગ જોઈએ અને ખેત મજૂરોને પણ જોઈએ। ખાસ કરીને પ્રવીણભાઈ દિલ્હીમાં બ્લાસ્ટ થયો છે પ્રચંડ બ્લાસ્ટ આરડીએસ નો બ્લાસ્ટ કઈ રીતે જોવા એનો અર્થ એ છે કે પહેલગામ હોય કે દિલ્હી હોય કે ગોધરા હોય આ જેહાદી વાયરસ હજી ખતમ નથી થયા। मारो विश्वास है कि नरेंद्रभाई अमितभाई आ वायरस की पूरी सफाई करशे।